For me, the definition of success was engineering, to be very honest. मैंने बोला कि करूंगा तो इंजीनियरिंग, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा. ड्रॉप लूंगा, सेकंड ड्रॉप लूंगा, लेकिन इंजीनियरिंग ही करूंगा टॉप 10 कॉलेजेस से. 13 was the day when I decided कि इंजीनियरिंग नहीं करनी. Hello guys, my name is Shlok. Uh, Welcome to my channel. This is the first video of this channel. So let's keep this video a bit light and let's discuss that what this channel would be about first. So to start with, this channel would be about my experiences that I have had. Actually, I'm in third year of my college, so it would be about my experiences that I have had in the last 2 years of my college and the experiences before that, which is very much important to tell you guys because it gives you a background that why the experience I had in the college were eventually there. Secondly, of course, we'll discuss the further experiences I'll experience, and not only the experiences, but as I'm a student of economics and public policy, we'll discuss few policies, we'll discuss real case studies, and some economic concepts, finance concepts. So I'll just keep updating on that. Whatever I find, because I feel that the best way of learning is discussing it with someone. So for me, those someone is you guys, because when I also learn, I can make a video and I can upload simply. It will help me also to learn, and of course it might help someone else who's on the other side of the screen. To start with, let me give you a background that it's an interesting story. It's a very interesting story, let me tell you guys. So let's start the story with class 10th, because from there everything starts. So what happened in class 10th was, not in class 10th, but in the early stages of my acads. I was very much interested in science. Okay, so I wouldn't say technicalities, but the nature of science, like how things work, why do they work in certain way, how do aircrafts work, how do rockets, go into the outer space, a lot more things, astrophysics, that astronomy, study about stars and all that. I was very much interested in seeing stars through telescopes. It was always my dream to build a great telescope. So this is how everything started. I was very much interested. I was always into factual books, and I would always see that facts videos on YouTube, that science fact videos, not ऐसे कोई बेहतर get fact वाले videos, but science fact videos. For me, that was the definition of science. I didn't know that science had technicalities. So I had decent marks in class 10th. I took science in class 11th. So we are science. Now, when I took science, I was introduced to the real world of the non-medical. That's physics, chemistry, and maths. And that time, that whole curiosity and inquisitive mind that I had somewhat faded away. Why? Because then I was introduced the rat race of J. And of course, at that age, you are like, you have to make your parents proud. You have to make the people proud in your surroundings. You have that ache inside you. I also had that ache that yeah, JEE निकाल लूंगा तो नाम होगा, engineer बनूंगा. I would be an engineer only, because towards the end of class 10, just started seeing at what engineering really is. So मैंने यार engineering ही बनना है, engineering बनना. For me, the definition of success was engineering, to be very honest. कि मैं तो engineer बनूंगा, कि मैं तो engineer बन के successful हो सकता हूँ. That was a fixated mindset that I had, which is really bad. I wouldn't say fixated mindset is always bad, but it is mostly bad in cases where you don't explore the other options. And when you're only fixated to one thing, even though you know or you don't know that you're interested, or you will go through that. And you don't explore other options, so you only have that option. But interestingly, things didn't go that way. Let's continue the story, you'll get to know why. So as I told that, I was like, the definition for me was that engineering ही करेंगे, whatsoever happens,
I'll do engineering. Then I was introduced to JEE. I didn't know about JEE, about anything about JEE or this competitive exams in class 10th. I was introduced to this when I came in class 11th. Starting का जो महीना होता है ना, starting में तो I was focused on these first chapters. कौन सा है first chapter? I think in maths it was something, don't remember exactly, but I was studying these chapters. But then I was introduced to JEE and कैसे competitive exams होते हैं, and क्या होता है, means क्या है, advance क्या है, दो exams होते हैं. It's really tough to crack. लोग कोचिंग लेते हैं, लोग कोटा जाते हैं, different different coaching centers में जाते हैं. It's so tough. I was like, नहीं यार निकालेंगे इसको निकालेंगे तो नाम होगा नॉल. Being very honest. ठीक है. एंड इंजीनियर बने तो इंजीनियर लोग की तो वैसी और होती है, नाम वाम होगा कुछ तो ऐसे ही था यार मेरा उस समय. आई डोंट नो व्हाई बट दिस वाज द माइंडसेट. एंड शायद इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग ली. साइंस तो मैंने शायद इसलिए ली थी क्योंकि मेरा वो इंक्विजिटिव माइंडसेट था. पर डाउन द लाइन मुझे मालूम था कि अब टेक्निकलिटीज में समझ में आने लगी एंड दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थॉट इट वुड बी. एंड मूविंग फॉरवर्ड इन क्लास 11 आई वाज स्टडीइंग आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि वो जेई वाला तो आई गया था कि नहीं अब तो जेई निकालना है. पुरानी तो चीजें कहीं कहाँ गई मालूम नहीं कि वो जो पुराना श्लोक था कि वाज इंक्विजिटिव अबाउट एवरीथिंग. कुछ नहीं, पढ़ो, जेई निकालना, जेई निकालना, जेई निकालना. Or at least I have to get a good college. I have to get at least top 10 colleges of India at least. वरना तो जाऊंगा नहीं करें ड्रॉप लूंगा मैं. इंजीनियरिंग नहीं करनी है पर ड्रॉप लूंगा, टॉप 10 टॉप 5 कॉलेजेस में नहीं हुआ. दैट वाज द माइंडसेट. पहले महीने तो बहुत मोटिवेशन थी, 2-3 दिन में बहुत मोटिवेशन थी. पढ़ा मैं 10-10 12-12 घंटे. I used to sit for long hours, study, study, study. When my parents were shocked because I wasn't, you know, that sincere student all along. They were also like, how is he doing this? They were also, feeling a bit proud, and I was also like, नहीं यार अच्छा है, कुछ तो हो रहा है. But down the line, things changed. I couldn't continue the way I was, in the start. Like most of the students, that motivation faded out and got into other things. And it's a bad things, but nahi thi wo motivation. I couldn't, stay that much focused. कोचिंग ली नहीं थी मैंने. मेरे एक सर आते थे, ही ओनली यूज्ड टू टीच मी. थोड़ा बहुत यूट्यूब से जो पढ़ा, फिजिक्स वाला से जो पढ़ा वही सब पढ़ा. नॉट लाइक प्रॉपर कोचिंग इन ऑल कि मैं सुबह जा रहा हूँ शाम को आ रहा हूँ, वैसे वाली कोई कोचिंग मैंने ली नहीं थी. आई थिंक दैट वाज आल्सो अ मिस्टेक दैट आई लर्नड व्हाइल द जर्नी कंटिन्यूड. सो ऐसे ही करते करते 11th तो खत्म हो गया, कुछ ऐसा खास हुआ नहीं. 12th स्टार्ट हुआ. 12th के स्टार्टिंग में भी फिर वो मोटिवेशन आई कि नहीं यार अब तो कर देंगे, 12th तो एकदम अच्छे से करेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 was the, no, so 2023, towards the end of 2023 जब अक्टूबर होगा तो 11th भी स्टार्ट कर देंगे. 12th का तो सिलेबस मैं पहले ही कंप्लीट कर दूंगा. उसके बाद 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस साथ साथ में करके जनवरी और अटेम्प्ट तो फोड़ देंगे. मेंस में मेंस निकाल ही लेंगे, एडवांस का फिर देखते हैं. मेंस को भी निकाल ही लेंगे. ये थी मोटिवेशन. फिर 12th में ही मोटिवेशन, पहले 2 महीना पढ़ा. इलेक्ट्रिक वाला कोई तो चैप्टर था उसमें, सो वो सब पढ़ा एकदम अच्छे से. फिर वही हुआ कि मेरी बहुत बड़ी पता है क्या गलती थी, मैं बहुत ज्यादा चीजों को ना वो करने लगता था कि नहीं यार परफेक्ट करना है, परफेक्ट करना है, परफेक्ट करना है. सो और शॉर्टकट्स ढूंढने लगता था कि यार अच्छा ये वाला चैप्टर थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो दूसरे वाले चैप्टर में ज्यादा टाइम मिल जाएगा. क्वेश्चन है थोड़ा कम प्रैक्टिस कर लेता हूँ पहले ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दें. तो मुझे तो ये मालूम था पर हमेशा मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को करता हूँ तो उसमें कभी क्वेश्चंस भी नहीं प्रैक्टिस किया. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कुछ हुई नहीं, रश करता गया. एंड वो रश करते करते कभी कुछ अच्छे से हुआ ही नहीं, है ना. पर यार वो एक बात होती है ना कि समटाइम्स इट इज गुड दैट इट डजंट हैपेंस. एंड आई फील that that was the case with me that time. I wasn't made for J, to be very honest. I realized that recently, like after I joined college, spent a few months in college, then I realized that I wasn't an ideal engineering student. मैं नहीं कर पाता शायद उधर जाके. The reasons being because 12th में भी करते करते मुझे ये तो समझ में आ गया था कि नहीं हो पा रहा है ये. I couldn't really grasp that heavy maths. Grasp in the sense कि capabilities नहीं है, but मेरा मन नहीं लगता उस चीज में कि मैं वो उतने घंटे बैठ के एकदम तगड़ी कैलकुलेशंस करूँ and all. I'm
I am not an ideal student for engineering because I think my mind aligns somewhere else. वो मैंने बोला था इंक्विजिटिव माइंड, सो वो माइंड मेरा नहीं गया था, एंड दैट वाज माय रियल पावर आई गेस, क्योंकि मैं चीजों को लेके क्यूरियस था। वो टेक्निकलिटीज में वो क्यूरियोसिटी मर गई। सो अब इधर आता है ट्वेल्थ का रिजल्ट। ट्वेल्थ के रिजल्ट में क्या हुआ कि आई गॉट 75%। टू बी वेरी ऑनेस्ट 75% आए थे मेरे। आई वाज बेयरली पास इन मैथ्स, बहुत कम नंबर आए थे मेरे मैथ्स में। सो द होल क्राइटेरिया ऑफ दिस इंजीनियरिंग वॉज खत्म कि अब तो नहीं करनी इंजीनियरिंग, नहीं हो पाएगा, देखते हैं। एंड मेरा सबसे वो था कि जो मेरा फिक्सेटेड माइंडसेट था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, उसको मुझे ओवरकम करने में बहुत टाइम लगा। मैं सोचता था बीए कौन करेगा, बी कॉम कौन करेगा, मतलब मैं तो नहीं करूंगा। जो करते हैं वो कहते अच्छी बात है, नॉट डिफेमिंग यू। मैं खुद भी इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पर उस समय मेरा माइंडसेट था, जो कि बहुत गंदा माइंडसेट था, कि ये कौन करेगा, मैं तो नहीं करूंगा ये, क्योंकि मेरी डेफिनेशन सक्सेस तो इंजीनियरिंग से डिफाइन होती है ना। मैं ये तो नहीं करूंगा। इधर एंट्री होती है मेरे चाचू की। ही हैज अ वेरी गुड alma mater. He has studied from LSC. He has seen the world. He has experienced everything, and I'm blessed to have him in my life. The reason being, मेरा mindset change करने में he was the one who played a major role. वो नहीं होते तो मैं क्या कर रहा था मुझे I have no idea, because कोई गाइडेंस नहीं था, मेरे कोई मेंटर नहीं था। मैं बस वही सोच समझ रहा था जो मैं सोचना समझना चाह रहा था, जो मैं दोस्तों सुनता था, जो कि जिनका नॉलेज लेवल मेरे ही जितना था। सो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। नो वन हु हैज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाज टेलिंग मी समथिंग और गाइडिंग मी। मेरा तो वही माइंडसेट था ना, उस एज में तो होता भी यार माइंडसेट कि नहीं भाई मैं तो सब जानता हूँ। पता नहीं कैसे यार 16-17 साल के लोग कैसे अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं यार। इंजीनियर्स भी जाके इंजीनियरिंग कहाँ करते हैं, क्योंकि दे रियली डोंट नो कि व्हाट दे एक्चुअली वांट, एंड दे फिगर आउट आफ्टर अ व्हाइल दे आर इनटू इंजीनियरिंग कि नहीं यार आई एम नॉट आई मेड समथिंग आई मेड समथिंग फॉर एल्स, मेड फॉर समथिंग एल्स, सॉरी। सो वो चीज होती है। अब आई समझ में आया कि नहीं यार इंजीनियरिंग फेड आउट हो रही है। सो गया मैं उनके पास डिस्कस करने। एक्चुअली उनका मेरे पास कॉल आया था एक दिन कि श्लोक व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर अकेड्स, रैंडमली। मुझे ऐसी बात नहीं हुई, उनका रैंडमली कॉल है कि श्लोक व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर अकेड्स, वाज दैट कंसर्न। एंड दैट मोमेंट चेंज। मैंने बोला चाचू स्पिट, इट्स नॉट गोइंग गुड, इंजीनियरिंग देख रहा हूँ वगैरह वगैरह। सो आई वेंट टू हिज ऑफिस, discussed a few things. So he asked me a few questions, and those questions really shaped the way I think right now. That fixated mindset ना, लगा हो टाइम, मुझे लगा 1-2 दिन प्रोसेस करने में उन क्वेश्चंस को, अपने आप से क्वेश्चन करने को। पर कहीं ना कहीं वो माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हो गया कि नहीं, वो फिक्सेटेड माइंडसेट एक अबंडेंस एंड एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट में चेंज होना स्टार्ट हो गया कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, यू जस्ट हैव टू फाइंड योर वे। एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया। मैं आई वाज आल्सो लाइक कि नहीं यार ठीक है, अगर इंजीनियरिंग नहीं हुई तो ड्रॉप नहीं लेना है, क्योंकि आई न्यू दैट मैं ड्रॉप में भी बोल रहा हूँ मैं कर लूंगा, पर मैं नहीं कर पाऊंगा जहाँ तक, क्योंकि मैंने अभी नहीं कर पाया ना 2 साल में, तो मैं ड्रॉप में भी नहीं कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। दैट वाज माय रियलिटी, जो मैं डिनाई कर रहा था कि नहीं यार कर लूंगा, देखेंगे कर लेंगे। पर समवेयर आई न्यू कि शायद वो नहीं हो पाएगा, वो गलत डिसीजन हो जाएगा। पर मैं वो होता है ना कि अपने आप को आपको एक फेक सेटिस्फैक्शन देनी होती है, तो मैं वही दे रहा था कि नहीं हो जाएगा, देखेंगे। सो व्हाट हैपेंड वाज कि गया मैं हूँ क्या, अगेन आई वेंट फॉर फ्यू डेज। वही काउंसलिंग एंड मेंटर चली, वो ऐसे मांगी नहीं, वो खुद बहुत लाइक वी आर फैमिली। सो ही वाज जस्ट concerned, and that's why he always guide me. He's not a counselor, he's not a mentor, but वो होता है ना कि फैमिली है तो यार ठीक है, and that's a blessing to be very honest. Randomly what happened one day when while we were discussing course, and फिर बोर्ड का रिजल्ट तो खराब हो ही गया था,
13th May was the day when I went to 13th May was the day when I decided कि इंजीनियरिंग नहीं करनी, क्योंकि मेरे बोर्ड के रिजल्ट बहुत खराब आए हैं. बिट सैट भी देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई हैव सिक्योर्ड वेरी लेस मार्क्स इन मैथ्स एंड देन बिट सैट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था. सो बिट सैट देना नहीं है, और कोई कॉलेजेस का मैंने ऐसा फॉर्म भरा नहीं है, जेई हुआ नहीं है. सो आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट. तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन ऑलमोस्ट क्लोज ही हो चुका है. सो आई वेंट टू डिस्कस अ फ्यू ऑप्शंस विद हिम. She was like कि let's go with this BCom and BBA वगैरह, अब तो कहीं कर देंगे, मतलब कि let's do this and then we'll eventually pursue MBA. So what in BCom and BBA we'll figure out. ठीक है, बहुत बातें हुई थी, but to just कि let's do something for now. Long back we're going in a train, we're traveling somewhere. He was with us. He has done MPhil in public policy from LSE, London School of Economics, and he knew the power of that course, because public policy is a very prominent course, is a very niche course, and is a very growing field in UK and the US, and it's coming to India. मुझे इतना कुछ नहीं मालूम था, अब तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है. उस समय मुझे कुछ घंटा नहीं मालूम था. So randomly we were discussing, and that thing stayed in my mother's mind. Public policy, the word public policy. कितनी इंटरेस्टिंग है यार. मैं तो उसमें बोलता हूँ कि भगवान की चीज है कि राइट टाइम पर राइट चीज जिसके उससे हो जाए, एंड दैट चेंजेस योर ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइफ. ये मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि फिर बताता हूँ क्या हुआ क्या था. सो आई वाज गोइंग टू हिज हाउस. मम्मा ऐसी रैंडमली बोली कि डिस्कस अबाउट व्हाट ही वाज सेइंग, ना कुछ पब्लिक पॉलिसी करके बोल रहे थे वो. एक बार उसका भी पूछ लेना कि क्या था, क्या पता कुछ हो कोर्स वगैरह उससे भी. तो रैंडमली मेरे दिमाग में था हाँ हाँ मैं पूछ लूंगा, देखता हूँ. गया मैं उनके घर. मैं भूल गया था उनके घर जाके कि पब्लिक पॉलिसी करके. फिर मुझे याद आया कि मम्मा ने कुछ पब्लिक पॉलिसी करके बोला था, वो पूछना चाहती उसे. तो पूछा मैंने कि चाचू आपने पब्लिक पॉलिसी करके कुछ बोला था. मम्मा बोल रही थी कुछ. रिएक्शन चेंज्ड. I was like, yes, public policy. Then he told me about public policy. What is public policy? How good is the course? Combined with economics, it becomes a very solid course for the bachelor's level. He was like, okay, go home, find courses, but find a course that is economics and public policy. It's giving economics and public policy degree. Okay, I surfed through the net. कुछ ऐसे ज्यादा कोर्सेज पब्लिक पॉलिसी के मिले नहीं. द कोर्सेज वर देयर in top universities of abroad or universities in India, but at a master's level. Bachelor's level mein the only course I saw that time was BA in Economics and Public Policy at Jain deemed to be University, Bangalore. I knew about Jain because I have a known person who studied at Jain, so I knew about the college, but I wasn't very much opinionated about the college because मुझे उतना मालूम नहीं था college का. I just knew कि the college exists. I shared the course with Chachu that, see Chachu, this is the course, it's in Jain deemed to be University. That time it was a 4-year course. But due to some logistical and atrocious reasons, the college decided to give me a 3 year course. That's a reality of today. Now the course that I'm getting is not a 4 year course, it's a 3-year course. So my degree will end in a year and I'm in third year right now. Cutting back to 2024. Chachu was, this is a really good course. It's a 4-year course. You understand the impact of that. I went to his house. My brother was also there. So we both went. We discussed that what is the future options. And then it really interests in, it really shifted me, and it really interested me because it somewhat gave me a hint of that inquisitive mind. That, yeah, idhar to I can explore. Because the course was so nice. You discuss policies, you could understand how economy works. वो साइंस वाला जहाँ मुझे था कि how does science work, how does things work, either how do policies work, how do governments work, how do economy work. I have the freedom to understand that. वो मुझे बहुत पर्सनली भी बहुत
अच्छा लगा कि नहीं यार, दिस अलाइंस विद माई इंटरेस्ट्स, वो मुझे वापस 10th वाली चीज आ रही है. दैट रियली शिफ्टेड मी. आई एक्सप्लोर्ड अबाउट द कोर्स. आई डिडंट से दैट मैंने उनकी बस बात सुन के ले लिया कि नहीं यार है, दो उनकी बात सुन के भी ले लेता सो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज ही हैज दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. आई ट्रस्ट हिम. But I did my own research also, and studying about the subjects that were included, I found them interesting. So I enrolled in the course. So this was the thing that यार मुझे कुछ नहीं मानता 2 साल में कि इंजीनियरिंग के अलावा कुछ होता है. मैं सुनने के लिए भी नहीं तैयार था कि कुछ और होता है. बहुत बार हुआ कि कुछ नहीं, बीए इकोनॉमिक्स कर लेना. बहुत बार बातें हुई हैं ऐसी. मैंने बोला कि करूंगा तो इंजीनियरिंग, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा. ड्रॉप लूंगा, सेकंड ड्रॉप लूंगा, लेकिन इंजीनियरिंग ही करूंगा टॉप 10 कॉलेजेस से. टॉप इंजीनियरिंग करूंगा ठीक है, टॉप 10 कॉलेजेस को छोड़ के करनी ही नहीं है मुझे. ये माइंड, टॉप 10 इन द सेंस कि आईआईटीज और बिट्स वगैरह जो भी है. क्यों था मुझे माइंडसेट वो मुझे नहीं मालूम. आई थिंक मुझे प्रूव करना था किसी को कुछ, या मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करना था. कुछ तो था, पर आई डोंट नो कि ऐसा माइंडसेट क्यों था मेरा, पर यही माइंडसेट था. वो चेंज होने में ना बहुत टाइम लगा. एंड आई से कि यार भगवान की कृपा है, कुछ भी है, बिलीव इन गॉड. बिकॉज अगर उसने मम्मी ने पब्लिक पॉलिसी नहीं बोला होता ना, आई डोंट नो वेयर आई वुड बी. मैं क्या कर रहा होता, मैं क्या नहीं कर रहा होता. एंड टुडे आई सी माई सेल्फ. आई वुडंट से दैट आई एम डिसहार्टेंड विद माई सेल्फ, बिकॉज मैंने कॉलेज में जाके बहुत काम किया है. बिकॉज आई न्यू समवेयर कि वो 75% वाला बोर्ड का रिजल्ट कवर अप करना है, जो मैंने इंजीनियरिंग नहीं की अच्छे कॉलेज से, जो शायद मेरे लिए ड्रॉबैक है, शायद मेरे लिए एक थप्पा है कि मैं फेलियर हूँ. जो भी है वो मुझे कवर अप करना है. एंड उसको कवर अप करने में लगेगा टाइम. पता नहीं क्यों, शायद वो नहीं है फेलियर, वो एक अच्छी ही बात है कि मैं उस फील्ड से शिफ्ट कर गया. एंड आई एम इनटू अ फील्ड दैट इंटरेस्ट्स मी. बट स्टिल वो लगता है मुझे, मैंने कॉलेज में 2 साल बहुत मेहनत किया, मैं आगे भी करता रहूंगा. मैं टेल यू अबाउट कि वो क्या है, कैसे मैंने फिगर आउट किया कि मुझे क्या करना है, कैसे मैंने प्रोफाइल बिल्ड की, एंड आगे क्या मेरे टारगेट्स हैं. आई विल शेयर ऑल दैट ऑन दिस चैनल. विद दैट आई विल शेयर पॉलिसीज, क्योंकि यार पॉलिसीज में पढ़ता हूँ. एंड एज आई टोल्ड दैट फिर मुझे पढ़ने में मजा आता है. सो मैं पॉलिसीज पढ़ता हूँ, मैं इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ता हूँ, फाइनेंस थ्योरीज पढ़ता हूँ, फाइनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ. तो अपनी लर्निंग के लिए भी मैं एक वीडियो बना के अगर पोस्ट कर दूंगा, एंड इट वुड हेल्प समवन. सो इट्स नो हार्म इन दैट. there's no harm in that, no. So I'll try that. But let's connect in next video. I'll tell you the further story that how I built my profile, how I started my first year, and eventually this vlog and this video should have been started from the first year itself. But it's fine. अभी शायद मेरे पास बनाने के लिए और बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, एंड बहुत ऐसी स्टोरीज हैं जो जिससे अच्छा बन पाएंगे ये वीडियोस. सो yes, this was a background of my journey till college starting. Let's see उसके बाद मैंने क्या किया नेक्स्ट वीडियोस. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर फेसिंग समथिंग लाइक दिस, यार कि वेयर यू आर आल्सो स्टक कि यार नहीं मुझे तो यही करना है, फिक्सेटेड माइंडसेट मत रखो. ऑलवेज हैव अ प्लान बी एंड प्लान सी. मेरे पास वो ब्लेसिंग थी कि मेरे चाचू थे, सबके पास वो ब्लेसिंग नहीं होती है. बट फिगर आउट योर वे. देयर इज abundance things in the world to offer you. Engineering, medical are good options, but they are not only options. बहुत से लोग उसको बिना करे भी सक्सेसफुल हो जाते हैं. They find their way, find yours. है ना. बहुत मुझे ये लेट चीज समझ में आई है, पर it's the reality. चलो, let's connect in the next video. By then, if you like the video, please subscribe and hit that like button. Also, I'll drop my LinkedIn and Instagram page in the description. So do connect. See you in the next video. Bye bye. Thank you.